Hello friends, welcome back to my channel. So this video is nowhere related to any peak of the week or a peak of the month, but I want to make our Indian retailers aware of few of the facts which can help to make them better traders and cut down their losses. So ये वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि हम शेयर मार्केट में कहाँ पे गलती करते हैं और हमें कहाँ पे अपना सुधार करना चाहिए सो डैट वी कैन अचीव अवर गोल्स ऑफ अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट फॉर आवर रिटायरमेंट से. So here we go. The topic is why 99% retailer lose money in India. This is the biggest, I can say, blunder in India, that 99% of our retailers lose money even though the Indian Nifty is the best performing index among all the index in the world, and it may come to top one in maybe next 5 or 10 years. So हम रिटेलर्स पैसा क्यों नहीं कमा पाते मार्केट से, ये हमें जानना है. अगर हमें अपनी कमजोरी का पता चल जाए then we can earn good amount of money from stock market. So here are few of the highlighters which I want to highlight for you guys, so you can understand why we are losing and we can convert from losing end to the winning end. इसमें मेरा कोई भी एडवर्टाइजिंग या कुछ भी मेरा सर्विस का एडवर्टाइजिंग का कोई भी मेरा मतलब नहीं है. दिस इज जस्ट बेसिक थिंग्स मैं पब्लिक में हाईलाइट करना चाहता हूँ सो डैट एवरीबडी इज अवेयर that why we are making losses and what things we should improve so that we can be a better trader in future, right? अपनी गलतियों को सुधारना बहुत बड़ी बात होती है, बट उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? So let's start, not waste time on this. So first of all, what I think is following the news channels and tips is the biggest blunder our retailers make. हम लोग न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं एंड देन समवन कम्स अप ऑन द न्यूज़ चैनल एंड दे स्टार्ट हाईलाइटिंग के आप ये शेयर बाय कर लो, ये वाला शेयर इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा. व्हाट दिस पीपल आर डूइंग एक्चुअली, आर दे, इफ डू यू थिंक इफ दे आर कमिंग अप ऑन द टीवी और बोलते हैं कि ये शेयर बाय कर लो, इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, उन लोग के खुद के पास ही इतना करोड़ों रुपया होना चाहिए. वाई शुड द डैम दे शुड कम डाउन टू न्यूज़ चैनल एंड टेल यू कि तुम लोग भी इतना कमाओ, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी. ये न्यूज़ चैनल्स पे, काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स पे टिप्स आती है और फिर जो रिटेलर पब्लिक है वो चालू हो जाती है वो स्टॉक बाई करने में, जबकि वो टाइम पे बड़े पैसे जो लगे होते हैं मार्केट में, बिग प्लेयर्स, दे स्टार्ट डिप्लॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट, यानी वो लोग का ऑलरेडी 2x 3x हो चुका होगा पैसा, तब वो रिटेलर्स को उसका जाएगा कहाँ पे, स्टॉक बेचेंगे कहाँ पे, दे हैव टू सेल इट टू रिटेलर्स, राइट? लाइक यू एंड मी. वो अपना स्टॉक खाली करना चालू करेंगे एंड दे आर इन मल्टी बिलियंस, नॉट इन मिलियंस. करोड़ या 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में नहीं होता है. उन लोग का जो पैसा रहता है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ऐसे में इन्वेस्टमेंट रहता है. इफ़ यू सी द फिगर्स ऑफ FII सेलिंग फॉर लास्ट ईयर 2022, इट हैज़ कम डाउन टू 2,48,000 crores. वो लोग ने 2.5 लाख करोड़ का स्टॉक सेल किया है लास्ट ईयर में एंड दे आर गोइंग टू बेयर लाइक ह्यूज लॉसेस फॉर दैट. दे हैव गॉन हाईली heavily short on Indian markets and they will start buying the Indian stocks now, and that's the reason we are seeing last 2 days the FI figures are 18,000 crore in 2 days of time, which is like almost 10x buying in last I can think of is like 2 to 3 years. कभी इतना बड़ा बाइंग देखा नहीं है मैंने. So the point I'm trying to make you understand is whenever you follow TV channels and all these things, the people over there come down and try to sell their stocks and we retailers try to buy that. So try to avoid news channels. वहाँ पे जितना भी हमें दिखता है, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. Second point is trading based on emotions and no proper trading system. Like most of the retailers in India,
वी डोंट हैव प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। हम लोग नौकरी वाले इंसान हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर मिडिल क्लास एंड दे आर इनटू 9 to 5 जॉब्स। हम लोग के पास कोई टाइम नहीं रहता है ट्रेड स्टॉक मार्केट को स्टडी करने का या कुछ। सो द थिंग व्हाट वी डू इज़ वी फॉलो न्यूज़ चैनल्स। हम अपने इमोशंस में आ जाते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कुछ तो हम वो फॉलो कर लेंगे। हाँ, अगर किसी ने बोल दिया कि ये XYZ स्टॉक खरीद लो, ये 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, या वी ट्रस्ट देम बिकॉज दे आर आवर फ्रेंड्स एंड दे वोंट टेल लाई टू अस। बट उसकी भी गलती नहीं होती, वो कहीं और से सुन के आया होता है एंड इट्स लाइक word of mouth which spreads over and people blindly follows it because their friends or their nearby people are saying that this thing will go up. So we are not having a proper trading system. We just trade based on our emotions. So that's the wrong thing. We should have a proper trading system. If we don't have it, try to do SIP. SIP in the sense, don't try to follow any mutual fund SIP or anything. You can do your own SIP. अगर कुछ if you, it's very easy to invest in stock market. If you just pick 5 top companies in India, या फिर आप निफ्टी के रत्न 9 रत्न का स्टॉक्स चेक कर लो। ट्राई टू पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ इन दैट इफ़ यू डोंट हैव टाइम। उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो एंड देन यू विल सी आफ्टर 5 years एंड 10 years योर मनी विल डबल ट्रिपल 4x, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट रेदर देन ओवरनाइट गेटिंग करोड़पति। आजकल Zerodha का रिपोर्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हु आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, दे हैव converted from investment to options, and options is nothing but hero to zero, जो zero हो जाता है end में। I'll just open that report from Zerodha. हाँ, here he says Zerodha. For the past last year, we have seen a trend of retail traders shifting from trading stocks and futures to buying options. This may be fueled by the restrictions on intraday leverage on stock and futures under the new peak margin rules. That's fine. This trend is also strengthened by influx of younger, more aggressive traders. This has been alarming as per Zerodha. ठीक है? So this is a wrong thing. See, if you have the proper knowledge of options, you go and trade in options, you earn some money and get out of it. That's a good thing. But if you don't have any idea, why are you going to make your money zero? Better than that, try to invest it and make it 2x, 3x, 4x over 10 years period of time. Why go for short term gains? So try to understand. Without proper knowledge, don't try to burn your hands in fire. Options is like fire. If you know properly how to manage it, you can do it. If not, then don't try to burn your fingers, right? The same thing is in third point, no risk management. हम लोग risk management नहीं करते। हम लोग ने कुछ भी अगर buy कर लिया, so we think that stock will go up only and we'll sit like कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग देखते रहेंगे अगर स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देन वी शुड हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। लाइक इफ यू बाय समथिंग, जस्ट ट्राई टू पुट योर गोल्स ऑन पेपर कि मैं अगर कुछ बाय कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए। आई वॉन्ट 2x अमाउंट, 3x अमाउंट इन 5 years, 10 years। मेक अ प्रॉपर गोल। यू आर नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉसेस, दैट्स द अदर थिंग। मेरा खुद का एक गलती है पास्ट से। इट वाज लाइक फ्यू इयर्स बैक, आई कैन रिमेंबर। मैंने यस बैंक में जब व्हेन इट वाज एट पीक 300 के करीब, आई हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन इट एंड आई वाजंट फॉलोइंग एनी स्टॉप लॉसेस और एनीथिंग ओवर देयर। मैंने उसका CAGR देखा, इट वाज ग्रोइंग कंपाउंडेड एनुअली 35% सिंस लास्ट 10 years। एंड माई थिंकिंग वॉज, अगर वो लास्ट 10 year में इतना ग्रो कर रहा है, नेक्स्ट 10 year में भी अगर 35% से ग्रो करेगा, माई मनी कैन गेट 10x। एंड आई इन्वेस्टेड 2 lakhs in it, but finally the price came from 300 to 10 rupees and I have sold that amount. I have made a huge loss in that and sold all my holding. So ideally we should follow the stop loss. That is important for our risk management.
The other things I need to cover is overtrading. We should not overtrade. Like what happens nowadays is a lot of people get money borrowed from the market. Like credit card आजकल काफी हो गया and there was a recent news in the newspaper which I am very much shocked that credit card से जो this year जो spends हुआ है that is like more than 3x. So people are started spending on the credit card, but the thing is they are not thinking on what or how they are going to pay back the amount. So even a cash is available on credit card with a huge interest of say 20-25% on your annual basis. So what I have seen is a lot of people do trading with borrowed amount from credit card, thinking all that they will make it 2x or 3x in 1 year's time. But ultimately 2 या 3 महीने में वो जीरो हो जाता है एंड उसके बाद फिर से वही साइकिल चलते रहता है दे अगेन गो एंड बोरो सम मोर अमाउंट अगेन वो जीरो हो जाता है एंड फाइनल दे आर इनटू बैड डेब्ट्स कि जिससे यानी बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इफेक्ट्स योर साइकोलॉजी वाइल ट्रेडिंग कि अगर हम लोग बोरो किए हुए अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं देन वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू विन because there is a pressure behind your mind that I need to pay back my interest and जो initial amount है and everything so that will not help you to win in this market. Other thing which retailers do is like they do invest in illiquid stocks when as I mentioned earlier like if there is some tips from your nearby people which is not a liquid it's a illiquid stock will start इन्वेस्टिंग इनटू दैट विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिस्क कि अगर ये कल ज़ीरो हो जाएगा तो उसका क्या एंड दैट्स अ थिंग अगेन लाइक के अब हम लोग का लॉसेस वहाँ पे चालू हो जाता है अगर कोई कचरा स्टॉक हाथ में आ गया तो वन मोर थिंग इज लाइक ट्रेडिंग इन डेब्ट रिटर्न कंपनीज लॉट ऑफ कंपनीज में देखा है मैंने जैसे कि डेट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रहता है and that company will never come into profit because they have to pay back the interest amount on all the amount they have borrowed from the market. फाइनली उसका जो प्रॉफिट लॉस कंपनी का रहता है इससे 10% या 15% 20% most of the amount will go into paying back the interest so it's not going to make big impact on the stock price of debt ridden companies even they can't be like 2x or 3x in say 5 year or 10 years also because उसका मेन पैसा जो है पूरा पैसा वापस देने में चला जाएगा जैसा हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग बोरो किए अमाउंट से कभी भी मार्केट में जीत नहीं सकते सेम थिंग विल हैपन टू दैट कंपनी ऑल्सो सो दैट इज द थिंग वी नीड टू कंसिडर नेवर इन्वेस्ट इन डेट रिटर्न कंपनीज एंड फाइनली ये गेम में अल्टीमेट गेनर कौन है देन ब्रोकर्स आर द अल्टीमेट गेनर्स इन दिस गेम ऑफ स्टॉक मार्केट बिकॉज दे आर द गेनर्स फ्रॉम बोथ साइड बाइंग में भी पैसा मिल रहा है सेलिंग में भी पैसा मिल रहा है मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड they are just bothered with their brokerage amount and retailers always lose and big players always win as the vision is long term for big players जो भी इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में वो लोग ने 2003 या 4 में इन्वेस्ट किया था काफ़ी सारा their vision was clear and long term they have sold now in say last year after 15 to 20 years so उसका पैसा अल्टीमेटली 10x हुआ ही रहेगा तभी जाके वो लोग बेचेंगे अदरवाइज दे वोंट सेल दे हार्डली गेट एनी इंटरेस्ट ऑन देयर मनी इन फॉरेन कंट्रीज यूएस या यूके एंड ऑल country like Switzerland they charge them for keeping their money why should they put their money in their Switzerland rather than putting in Indian stock market जहाँ पे prospects अच्छे हैं for next 10 to 12 years so try to keep a long term vision rather than short term में हीरो टू जीरो बनने से अच्छा है long term में हीरो बनो be a batsman like Dravid rather than a pinch hitter like any of the newcomers currently जो है so that's the thing in stock market you can always be a winner if you think of long term now we'll just see one projection कि अगर हमारा पैसा हम लोग एफडी में रखते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स see this projection I am showing you from the
clear perspective of investment for 12 years, not for 1 or 2 years investment or trading. Trading is different from investment. Investment is you buy something for लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से टाटा मोटर्स अगर अभी बाई किया ये रेट पे भी 600 के करीब आई एम डैम श्योर दैट आफ्टर 10 years यू विल गेट 6000 फॉर टाटा मोटर दैट इज 10x. But same thing if you put in some kachara stock like I don't know if some stocks which are not at all performing तो वो जीरो भी हो सकता है. So try to be investor, but investor in good companies. As I mentioned earlier, भारत की भारत रत्न companies है, you can think of that, or you can go to some good investment advisors and try to get the stock ideas from there, that where you can invest. So अगर आपका पैसा FD में है, you get hardly 6% return on investment in 1 year. So 1 rupee invested in your bank FD will convert to 2 rupees after 12 years. So you are making 2x only after 12 years in bank FD. That is after paying tax and everything, it will still come down. And the same thing, if you invest in stock market, I have made this projection using 50% return of investment on stock market. 1 rupee invested can convert to 129 rupees. That is 129%, 129, 12975% appreciation, 12,000 times appreciation, I can say. So this is not something like which is not achievable. It is very much achievable, but with proper guidance. अगर आपको कोई अच्छा मेंटर मिलता है, कोई अच्छा एडवाइसर मिलता है, then 50% is easily achievable in this market. And the reason I am saying this is because Indian market is like in bull run for next 10 to 15 years. Why? Because if you see, we have the most youth population in India, the most what you say educated people are in the youth population in India. Then we are growing production hub, overall in world. And overall globally India will be like third or fourth position on the growth chart. We are growing at a rate of 8% annually, which is very good compared to other countries like UK, US, which are like 2 3% or even like 1%. So growth is definitely there in India. And even if 8% GDP growth if we project, that will make our Indian markets to grow 15 to 20% minimum annually. And if our index can grow 15 to 20% annually, we can definitely make 40 to 50% annually in a good quality stocks invested. So that's the reason I am making this video right now, because I want to make you people aware of how to go with investment in Indian stock markets. So this is all about the video for now. I will come up with some other good videos in coming time. Thanks for watching my video. See you all soon. Bye. Thanks.